hello and a very warm welcome to all the viewers. My name is Malik Ahmed Hassan. I'm going to be your RJ for another cricketing analysis episode. With me is Zuha Irfan. You might recognize her voice because she also hosts another show called Dastane-Rekhta. Today she is going to be our cricketing expert. So before we get into the nitty-gritty and the details of the match, finally the news from the middle is a fortunate one, and Pakistan has finally won a match after losing 4 matches in a row in the World Cup. So Zoha, what are your initial thoughts? What would you say कि किस तरीके से पाकिस्तान ने finally एक जो streak चलती आ रही थी for losing 4 consecutive matches? I think that is also a history कि पाकिस्तान ने आज तक 4 matches नहीं हारे. Although Bangladesh के लिए भी this is the longest losing streak for them, but Pakistan managed to do really well. I think आज का match बहुत ज़्यादा crucial था हमारे World Cup में रहने के लिए भी. अगर हम इस streak को आगे winning streak को बरकरार रख सकें और अगर बाकी सारी teams हारती रहें जैसे हम चाह रहे हैं तो फिर हम वाकई में सेमीफाइनल के लिए शायद क्वालिफाई कर सकें. और आज एक दफ़ा काफ़ी अरसे बाद हमें स्पेशली इन दिस वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम आई थिंक आवर टीम परफॉर्म्ड एज अ यूनिट बोथ बॉलिंग साइड एंड बैटिंग साइड ने कोई भी फ्लॉज नहीं छोड़े in their performance. I think we should start with the way the Pakistani Shaheens have actually opened the innings with the ball, especially क्योंकि शाहीन ने जिस तरीके से जिस तरह उनसे समझा जाता है जिस तरह उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ऊपर से आके विकेट्स लेंगे, आज उनकी तरफ से वो इंटेंट नजर आया. His body language was actually something that was missing in the last few matches, तो वो finally अपने रिदम में दोबारा नजर आया. So bowling side did really well, especially both of our pacers Shaheen and Rauf and Wasim Jr. Yes. So all 3 of our pacers performed really well. Shaheen ने especially शुरू के अंदर जो हमें top order को topple किया उसने, he basically nipped the Bangladesh side in the bud, or he did not even give them a chance to even think about giving Pakistan a tough target. That is true. And also, I would also give a credit to Mahmudullah because he was someone who came in a very critical situation. Bangladesh was completely blown by Pakistan in the first 5 to 6 overs. But I think credit goes to him because he came and took the Bangladesh into somewhat of a rebuilding phase. जिसमें उन्होंने थोड़ा सा respectable total पे बांग्लादेश को ले गए. हाँ जी. Also, I think Mahmudullah की इस पूरे World Cup के अंदर he's been the best बैटर फॉर बांग्लादेश की साइड, लेकिन शाहीन ने भी एट द वेरी क्रूशल मोमेंट उसकी विकेट ली है. एंड थ्रू आउट द बॉलिंग आर्म I think bowling was amazing. Pakistan was exceptional with the ball. And I would want to talk about Haris Rauf as well at this point because Haris Rauf के ऊपर बहुत criticism हुआ. He has been out of form, out of nick from the very start of the World Cup. We couldn't see the Haris Rauf that we used to, witness when we witnessed it in the last 2 World Cups, T20 World Cups. He was phenomenal. He was the most economic bowler for Pakistan in the death overs. But today he was back in his prime form. Even at the start he faced some boundaries, but he came through and took a crucial wicket. Shakibul Hasan, I think, basically was the last beacon of hope for the Bangladeshi team. But he tried to hit a full shot और Agha Salman ने इसको catch कर लिया. Haris Rauf took the wicket. And also, I think the third pacer, the question of a third pacer, that has also been tackled very well by Pakistan by introducing Mohammad Wasim Jr. because we thought that probably we'll miss Hassan Ali in this match. लेकिन मेरे ख्याल में Mohammad Wasim Jr. ने किसी जगह पे ये फील नहीं होने दिया कि किसी एक्सपर्टीज या एक्सपीरियंस की कमी है जिसके ऊपर हम हसन अली को for the first place लेके गए थे वर्ल्ड कप के लिए. That experience was not something that we felt कि वो missing था. मोहम्मद वसीम जूनियर ने बड़े अच्छे तरीके से जगह को पूरा किया. Especially tail के अंदर बिल्कुल एंड पर आकर पाकिस्तान ने काफी अच्छा फिनिश किया, ऑल थैंक्स टू वसीम जूनियर. उसने तस्कीन और मेहदी हसन दोनों की विकेट्स ली, फुल लेंथ बॉल्स पे वेंट स्ट्रेट टू द स्टंप्स. And also I would like to talk about another aspect, very important aspect of Babar Azam as a captain. So that is, I think, still a weak point that Pakistan will have to address in the coming future because Babar Azam was okay in the very initial overs. उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी अच्छी थी, टीम को बड़ा ग्रुप में एक लेकर चल रहे थे यूनिट के तरीके से. लेकिन सर जब आपके 140 पे 6 आउट हो चुके हो या इसके if I'm not wrong ये स्कोर था, you don't need to go with the spinners. You should have introduced Wasim Jr. उनकी बॉल रिवर्स स्विंग हो रही थी. तो probably आप क्या समझते हैं कि वहाँ पे हमने बहुत बड़ा स्ट्रोक मिस किया because we could have reduced the Bengali total to 170 or 180 at this point. जी बिल्कुल नहीं, हम 200 के नीचे इसको बड़े इजीली रख सकते थे. और उसके अलावा I think we do feel a little bad criticizing our own team, but जहाँ mistakes होती हैं they should be pointed out. कि अभी पेसर्स के ओवर्स पड़े हुए थे, 10th ओवर के पूरे 10 ओवर करवाना अपने
लेग स्पिनर का ज़रूरी नहीं था, बट बाबर सेंट हिम आउट देयर. वसीम जूनियर जो बॉल्स उसने तस्कीन और मेहदी हसन को करवाई हैं वो पहले भी हो सकती थी, एंड अगेन 180 पे हम मैच फिनिश कर सकते थे. एग्जैक्टली. और इस पे एक और कॉन्वर्सेशन जो कि शुरू से वर्ल्ड कप पे चलती आ रही है अबाउट द स्पिन अटैक ऑफ पाकिस्तान. सो वी हैव सीन दैट इवन विद शादाब द स्पिन अटैक वाज आउट ऑफ कलर, एंड टुडे रिप्लेसिंग हिम विद उसामा मीर वाज आल्सो समथिंग दैट कुड बी क्वेश्चनड, बिकॉज उसामा मीर को रिपीटेड अपॉर्चुनिटीज देने के बावजूद ही हैज नॉट बीन एबल टू डिलीवर एट द बिग स्टेज. तो वो भी एक बहुत, उनको रन्स भी काफी पड़े हैं, और वो एक स्पिनर का एक हमारा डिपार्टमेंट वीक ही है. ओवर पिच्ड बॉल्स की उसने काफी सारे, लाइक आज के मैच में भी इफ्तिखार मेड अनदर मिस्टेक के 3 चौके खाए उसने इन द 37th ओवर. इन द वेरी नेक्स्ट ओवर उसामा मीर ने छक्का खा लिया. तो जी बिल्कुल. बल्कि वो एक बड़ा मजेदार मैं एक बात सुन रहा था आज कि उसामा मीर को अगर कहा जाए ना कि आपने 3 बॉल्स एक जगह पे करनी, तो मेरे ख्याल में उनके लिए पॉसिबल नहीं हो रहा. वो एक बॉल आगे कर रहे, एक बॉल फुल टॉस फेंक देते हैं, तो वो एक जो डिसिप्लिन से बॉलिंग करनी पड़ती है, जो प्रेशर डालते हैं, दैट इज नॉट देयर फ्रॉम अ लेगी जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि एक प्रॉपर लेगी स्पिनर जो उनसे वॉक करे, वो एक मिसिंग रहा. आज का मैच आई थिंक स्टैटिस्टिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट था. शाहीन बिकेम द सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर. आई थिंक एडम जंपा अभी भी हाईएस्ट है. इसके अलावा शाहीन आल्सो इज द फास्टेस्ट पेसर टू रीच 100 विकेट्स. बिग अचीवमेंट जी इन ओडीआई फॉर मेंस क्रिकेट. I think that was a record that first Mitchell Starc held, and now it has been taken by our own Shaheen Shah Afridi, and he is now the leading wicket taker in the World Cup, and also the fastest wicket taker in the ODIs. Yes. So now we will turn towards the impact player of the match. Okay. So that is a very tricky question, because I think there are few notable players that have performed exceptionally well to take Pakistan across the board. So if I had to ask you one person that you would consider as the impact player who has really turned the table for Pakistan, who would you choose? Achha, so I've actually really thought about it, and I am conflicted between Fakhar Zaman and Shaheen Afridi. I think a lot of our viewers would be conflicted too. Both of them delivered at a point when Pakistan needed them the most. Exactly. And at this point, अगर वो दोनों ये काम ना करते तो हो सकता था हमारी टीम दोबारा से बहुत बुरा परफॉर्म करती. Fakhar Zaman की ज़रूरत थी हमें for someone who aggressively batting करे, जल्दी से आके छक्के मारे, bowlers को under pressure करे, and then actually delivers. Like Fakhar Zaman, I think scored 7 छक्के मारे उसने, 7 छक्के मारे. That is also a record, because इससे पहले इमरान नजीर का रिकॉर्ड था of hitting 8 sixes, and now it's been taken by Fakhar Zaman, probably equaled if I'm not wrong. 7th इनके उनके 8 थे मेरे ख्याल में, तो एक छक्का भी कम था, लेकिन काफी करीब पहुंच गए. बट आई थिंक एट दिस इट वाज अ क्रूशियल मोमेंट जब हमें वो चाहिए था. एंड उससे पहले भी हम अपने पूरे वर्ल्ड कप में देखते आए जो हमारे ओपनर्स हैं वो खुल के परफॉर्म नहीं करते. दे आर वेरी इंटिमिडेटेड ऑफ एक्चुअली हिटिंग बाउंड्रीज, बिकॉज उनको लगता है जल्दी आउट हो जाएंगे. एक ओपनर की तरफ बहुत इशारा कर रही है इमामुल हक, क्योंकि आज नहीं खेल सके, और प्रॉब्ली एक वो की बने एंड पे उनकी जो रिप्लेसमेंट थी ऑफ टेकिंग पाकिस्तान टू अ विन. But at the same time, I think Shaheen's impact in today's match cannot be understated. Several wickets उन्होंने ली हैं. बांग्लादेश का तमाम जो टॉप ऑर्डर था वो immediately topple कर दिया. Before they could even think about making any comeback. A comeback. They were just toppled by balled out. So for me, that would be Shaheen. आज का main player. चलें इस पे हमारा डिसएग्रीमेंट होगा, because I think कि Fakhar Zaman was the impact player. He's a man of the big match. उन्होंने हमें चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भी ये चीज साबित करके दिखाई. उन्होंने रिपीटेडली साबित किया कि he is the guy who can take the game away from the opposition completely. जो कि एक चीज मिस कर रहे थे हम in our top 3 batsmen, because Abdullah Shafiq is someone who plays very technically. He's very good technically. Babar Azam is also someone who plays, seeing the ball, then hitting it and timing it. But Fakhar Zaman is a pure explosive वो बैट्समैन जिसका मैं एक बड़ी मिसिंग थी जो कि आज हमने पूरी किया. That's true. He is reliable, but only in these big matches. Yes. तो फिर भी मेरे लिए शाहीन would be the main. And I would say कि probably credit should be given to Iftikhar and Rizwan at the end, because I thought that there was still some chance ये पाकिस्तान के साथ हम कभी भी उम्मीद कर सकते हैं कि ये कुछ भी कर दें. But I think kudos to them, because they were actually very pressure बड़ी तरीके से handle किया, and they were able to take Pakistan across, तो जीत गया finally. जी. Also Rizwan is very good with sweep shots. उसने आखिर में चौके मारे, तो we needed those.
played in his usual style. Yes. लेकिन But the question वही हमारा जो पहले भी था, वो दोबारा एक दफा मैं सवाल छोड़ के जाऊंगा कि क्या पाकिस्तान को ये मैच वापस एक दफा वर्ल्ड कप में लेकर आ सकता है कि नहीं? That is going to be a question that we'll leave for you viewers as well. With that, I would like to conclude. Thank you very much, and I hope that you guys enjoyed the episode. And please like, share, and comment on YouTube, and also Khuda Hafiz.